देखो राजा, सो कल ਅਸੀਂ ਇਹ क्वेश्चन कर रहे ਸੀ, ठीक है। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। that was ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਗਿਵਨ ਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ, optimistic time, most likely and pessimistic। optimistic ਨੂੰ ਵੀ ਸੇ TO, most likely ਨੂੰ TM and pessimistic ਨੂੰ TB। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਈਂਡ TE। ਐਵਰੇਜ ਕਿਦਾਂ? weighted average। ਐਵਰੇਜ ਕਿਹੜੀ? weighted average। weight ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ? most likely ਨੂੰ, that is TM। so 4TM plus TP plus TO, तो 4 वेटेज किनू मिली? मोस्ट लाइकली नु। सिंगल वेटेज किनू मिली? पेसिमिस्टिक नु। और सिंगल वेटेज मिली ऑप्टिमिस्टिक नु। डिवाइडेड बाय 6 हो जाऊगा वेट्स, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, TE। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੇਰੀਐਂਸ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੇਰੀਐਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ TP TO upon 6 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। then ਨੈਟਵਰਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ TE ਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰੀਦਾ। ਅਗਰ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? TE ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ ਦਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ, ਵੇਰੀਐਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਆਰ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆਏ। ਬਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਵੇਰੀਐਂਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਆ, what is its purpose। ਸੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ C। B ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। C ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਨਿਊ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਵੇਰੀਐਂਸ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਂਥ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਂਥ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। उस प्रोजेक्ट लेंथ की वेरिएंस फाइंड करती है, स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड करती है। देन कहते व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट will be completed at least 4 weeks earlier than expected time। इस तरह की चीज तुसी किथे कीती है? बेल शेप्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दे अंदर, है ना। प्रोबेबिलिटी दे अंदर बेल शेप्ड तुसी जेडे प्रोबेबिलिटी डायग्राम पढ़ते हो, बेल शेप्ड वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यस और नो। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੇਖੋ, how will you use that। so let's start with the C part। C part C part ਲਈ what will you draw? bell shape, yes or no। so बनाओ bell shape, बनाओ पहला। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, yes or no। center straight line। ਇਸ ਬੈਲ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਲਾਈਕ 1, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ ਇਜ਼ 0.5 ਐਂਡ 0.5, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੁੱਟ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਸੀ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈਂਥ ਦੀ? 17। that is considered like a mean, means ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਆ? 17। that is considered in this like a mean। after that z ਕੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ? 0। remember on the center point z is 0 and standard deviation कितना फाइंड किया? 3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। मीन वाज 17 कि 17 डेज 17 वीक्स के अंदर एक्सपेक्टेड है कि वर्क विल बी डन, यस और नो। क्वेश्चन ने की पूछा हम ए फर्स्ट पार्ट, what's the probability that the project will be completed at least 4 weeks earlier than expected time। expected time is 17, वो तो 4 weeks earlier तक हो जाऊगा। 4 weeks earlier means 13 तक। तो 13 इस साइड कितने आऊगा? इट विल लाई दिस साइड।
सो इतने की करिए, लाइन ड्रॉ कर दो, एक डॉटेड लाइन लगा लिया इधर, ये सुनो, इस लाइन में डॉटेड क्रिएट कर लो। इतने होगा कि अगे इस साइड ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਪ ਟੂ 4 ਵੀਕਸ अर्लियर देन द एक्सपेक्टेड टाइम, मतलब 13 वीक्स तक काम पहुंचा होगा, तो शेडिंग किस साइड आओगे, टेल मी। इंग्लिश रीड करो एक बारी, देन विल डिस्कस। तो सुन, उन्होंने क्या, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ x is equal to 13, ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਸਟਾਰਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਅਸੀਂ। 17 ਵੀਕਸ ਵਾਸ ਯੂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੇ ਲਿਖਿਆ 13 ਵੀਕਸ। 13 ਵੀਕਸ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, that it should be completed, it will be completed at least 4 weeks earlier than 17, yes or no, earlier than the expected time is earlier than 17, 17 to 4 weeks earlier means 13, at least 4 weeks, उस तो कम से कम 4 weeks पहला, मीन्स 13 ते हो जाए, 12 ते हो जाए, 11 सारे कवर्ड है, तो 13 12 11 10 कवर्ड है, या 13 14 15 16 कवर्ड है, 13 12 11 10 मीन्स 13 दे लेफ्ट साइड वाली कवर्ड है या राइट साइड वाली, लेफ्ट साइड वाली, ठीक है, दिस शुड बी क्लियर। सो मीन्स यदि शेडिंग किस साइड करोगे, लेफ्ट साइड, समझे चीज, ये सुनो। सो यदि शेडिंग तुसी कर सकते, दिस इज द शेडेड एरिया विच इज योर आंसर। सो इतने अगे की सॉल्व करते सी याद, वी नीड टू फाइंड z वैल्यू, z इज इक्वल टू फॉर्मूला किसी x माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट्स x here 13, what is mean 17, standard deviation 3, so 4 by 3 is 1.33 and it's minus 1.33, yes or no, शो हो गया z ਦੀ वैल्यू। इस तो बाद कितने जाने सी z टेबल च, yes or no, याद है, एरिया फाइंड करना। सो वी नीड अगे एक और चीज दसो, उस टेबल च जब जाओगे, टेबल हुनी रेफर करते हैं, टेबल च जाओगे तो यू विल फाइंड विच एरिया, शेडेड वाला मिल जाऊगा या आ वाला मिलेगा, सोच के दसो, याद है फीचर कुछ। उस टेबल ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀ from the center point, means if you are using this z value you will get the area from the center point till this point, but ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਫਟ ਵਾਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਟੋਟਲ is 0.5, ਆ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਟੇਬਲ ਚੋਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਏਰੀਆ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, प्लस करके आ रहा माइनस करके आ रहा दैट, ठीक है। सो रीजन दोबारा सुन लो, सानू इन्ना पता है राजा, फर्स्ट पॉइंट ही ਅਸੀਂ डिस्कस ਕੀਤਾ कि बेल शेप्ड मींस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0.5 ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0.5, एवरीवन यस ऑन, ਸਾਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ पूरी की है 0.5। सेकंड थिंग याद रखनी जरूरी की है कि व्हेन यू विल रेफर द टेबल, टेबल रेफर करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਤੱਕ ਦਾ ਏਰੀਆ डिस्टेंस पता चलेगा, यस और नो, बट आवर रिक्वायर्ड एरिया इज नॉट दैट। सो की करोगे पूरा 0.5 जो आ वाला माइनस करोगे, विल यू गेट द शेडेड एरिया, दिस इज द कांसेप्ट, यस और नो। सो टेबल से चल रहे हैं, इन्हें क्लियर कर दिए, जस्ट अ सेकंड। सो टेबल्स याद है की करना, ओके। सो टेबल के अकॉर्डिंग देखो, दिस इज द z टेबल, नॉर्मल कर्व एक्चुअली, जिथे z ਦੀ वैल्यू ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਹੈ 1.33, 1.3 ਨਾਲ 3, so कितनी वैल्यू आई 0.4082, this is from the center of the graph,
सेंटर तो लेके इस पॉइंट तक इट इज 0.4082 एंड वी नो दैट सेंटर तो ये पूरी साइड दी कितनी वैल्यू है 0.5 सो दोनों ਦੇ डिफरेंस तो आ वाली साइड मिल जाऊंगी यस और नो सो हाउ कैन वी सॉल्व इट हाउ कैन वी शो इट अच्छा एक चीज डाउट आंदी बच्चे ਦੇ माइंड कि इथे तो -1.33 सी whether it is minus whether it is plus एरिया दा गैप उतना ही रहूगा दैट्स ओके ठीक है सो लिखो एरिया बिटवीन z is equal to 0 and z is equal to -1.33 is equal to कितना आया 0.4082 ठीक है therefore required area shaded area और required probability is equal to कितना होगा 0.5 minus 0.4082 that comes out to 0.0918 that is 9.18% 9.18% ठीक है क्लियर आंसर क्या आ गया 9.18% और 0.0918 नेक्स्ट सेकंड के लिए क्या देखो नो मोर देन 4 weeks later than the expected time was 17 तो 4 weeks further no more 4 weeks अगे कितने होंगे 21 कहते 21 तो लेट नहीं होना चाहिए नो नो मोर देन 4 weeks later than that नो मोर देन 4 weeks later than that कहते 17 एक्सपेक्टेड है उतो भी ज्यादा मैं 4 weeks तक वेट कर सकता उस तो ज्यादा लेट ना करियो इतनी गल करते ना सो दिस इज नो मोर देन 4 weeks later than the expected time उस तो ज्यादा नहीं करना मींस 4 weeks मींस 21 तक तो फाइंड करोगे टेबल तो लेट्स मेक अ न्यू बेल This was C, the first part. Now see the second part. ठीक है पहले ड्रॉ कर लो Ritika, we need 21 weeks है ना so we'll draw a line on the right side now because on the mid value that is center the z is equal to 0 mean is equal to 17 and now we need it for x is equal to 21 the standard deviation is 3 so first of all find the value of z z is equal to x minus mean upon standard deviation what's x 21 what is mean 17 upon 3 so this comes out to 1.33 positive ठीक है 1.33 पॉजिटिव ਹੁਣ सोचो ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚੋ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ no more than 4 weeks later than expected time ਦੇ ਵੀ 4 weeks ਅੱਗੇ ਤੱਕ सोच लिया उस तो अगे ना करियो यस नो मींस 21 तक कम हो जाए दैट्स ओके
उस तो लेट नहीं होना चाहिए एवरीवन, यस और नो? 21 तक कम हो जाए बट उस तो लेट बोलो नहीं होना चाहिए। मीन्स ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ 17 to 21 चाहिए या कोई भी वीक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 तक कुछ भी हो जाए। 21 तो अगे नहीं जाना चाहिए, क्वेश्चन इज सेइंग दैट उस तो ऊपर वाली नहीं मैं एक्सपेक्ट करता। एक्सपेक्टेड टाइम तो भी 4 वीक्स अगे तक कहते टॉलरेबल है, उस तो अगे नहीं। मतलब हुन अगर वो 15 वीक्स च काम करते तुम मना कर दोगे? नो, कुछ तो खुशी की गल है ना, एक्सपेक्टेड तो भी पहला हो गया। वी आर फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी 21 तो अगे ना जाए, उत्थे तक रहे। मीन 0 टू लैके 21 तक सारे काउंटेड। मीन्स योर शेडेड एरिया बिकम्स दिस फुल, उत्थे तक सारा। Are you getting that? Everyone yes or no? ठीक है, 21 वीक्स तक सारा एरिया यूज होएगा। So shade it properly, including till 21. ठीक है, सारा शेड हो गया from lower side to 21 सारा। Now we need to find the area from table। एरिया कितने चाहिए? एज पर द जेड वैल्यू 1.33, 1.33 तो फाइंड कर लिया। वी डिस्कस दैट, चाहे -1.33 ले लो चाहे प्लस ले लो, रीजन सोचो। जस्ट अगर -1.33 सी ओ सी की जीरो तो लेफ्ट साइड तो एरिया सी ता माइनस आ जाता, और अगर पॉजिटिव साइड का एरिया है तो 1.33 आ जाता। बट गैप तो उन्ना ही रहना ना रचा। 0 to 1.33 ले लो, 0 to -1.33 ले लो, गैप तो उन्ना ही। ठीक है ना, डिस्टेंस तो उन्ना ही रहूगा ना जेडी मर्जी साइड का होए। सिंपल लाइक अ नंबर लाइन। इधर जीरो है, फिर इट इज -1 -2, इस साइड किया 1 and 2। उन 0 तो -2 का गैप देख लो चाहे 0 तो 2 का देख लो, गैप तो सेम रहूगा ना बेटा। सो सेम थिंग अप्लाइज टू द नंबर लाइन, द नॉर्मल टेबल आल्सो, यस और नो? सो अंडरस्टूड द कंसेप्ट, माइनस का कोई इशू नहीं थे। सो मींस 1.33 टेबल विल अगेन गिव द वैल्यू 1.33 अकॉर्डिंग 0.4082। ओके, बट रिक्वायर्ड एरिया दिया सर सानू जो आंसर टेबल ने देना, दैट विल बी द वैल्यू फ्रॉम दिस टू दिस। बट वी नीड दिस साइड आल्सो, दिस इज हाफ साइड दैट इज 0.5। सो दोनों ऐड करके तो रिक्वायर्ड एरिया मिलेगा, यस और नो? फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट डाउन नाउ एरिया बिटवीन z is equal to 0 and z is equal to 1.33, that is 0.4082। ठीक है, and the required area or probability as per the shaded area है ना, that will be 0.50 plus 0.4082, that becomes 0.9082, that is 90.82%। yes or no? तो क्लियर है जब ऑल एंड क्लियर है जब 90.82%। वेरी गुड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट,
This was C the first part and C the second part. ठीक है? Now come to D part. If the project due date is 19 weeks, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਇਜ਼ 19 weeks. ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ 17 weeks. But due date is 19 weeks. मतलब ਸਾਡੇ plan according 17 ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ. Expected ਆਇਆ. What is the probability of not meeting the due date? What is the probability of not meeting the due date? Let's make a new bell now. This is not third case of C. This is D case. Okay? Yes or no? So put it a D point. So tell me, what will you do? Question says the due date is 19 weeks. So bell बना के राजा 19 आना किस side पे है? 17 was the midpoint, so 19 will be on the right side. So x is equal to 19 is on the right side. Okay. Z is equal to x minus mean upon standard deviation. 19 minus 17 upon 3. That is 2 by 3. It's 0.66. 0.66 or 0.67 you can say. Okay. 666 repeat on that. You can say 0.67 also. Now, question ne puchya ki. Question ke andar what's the expectation that of not meeting the due date? ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟਾਈਮ ਸੀ 17 weeks. ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ 19 weeks. What's the expectation ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਡਿਊ ਡੇਟ ਨੂੰ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ means you need on the right side of 19 yes or no ਕਿ ਸਰ 19 ਚ ਵੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਦੱਸੋ so you need the probability on this side ठीक है you need the probability on the right hand side okay yes or no तो करो इन्हें एक सेकंड मार्क राइट साइड रितिका शेडेड एरिया आ जाओगा बच्चा So now in number now, then we'll calculate from the table. What's the distance? देखो राजा. Now 0.67 is the value of z. Yes or no? So let's find the area from the table. Tell me. As per the table, you need to find the area of z is equal to 0.67. Tell me how much. 0.6 or it is seventh number time. 0.2486. 0.67 means area is 0.2486. Again, this area is from the center point. Yes or no? So write down area between z is equal to 0 and z is equal to 0.67 is 0.2486. Yes or no? मतलब केड़ा एरिया मिला राजा? Can you tell me? हाँ वाला. It's 0.2486. Yes or no? But सानू केड़ा चाहिए? इस तो right side वाला means half चो minus कर दी. Yes or no? So the required area, shaded area, or the probability. Required area, shaded area, or the required probability is equal to will minus from 0.
50. So it becomes 0.2514. That is 25.14%. Yes or no? 25.14%. Clear? Yes or no? Any doubt in the whole question? Check out question number 37, Raja. की क्या क्वेश्चन है स्मॉल प्रोजेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ 5 एक्टिविटीज हुज टाइम एस्टिमेट्स आर लिस्टेड बिलो तो एक्टिविटीज गिवन है 1 to 2 1 to 3 2 to 4 3 to 4 एंड 4 to 5 बस इन्हें डायग्राम है ये सुन डायग्राम शॉर्ट विच डिस्कस कर देना मैं की बनूंगा डायग्राम दोस्तों 1 to 2 एवरीवन yes or no after that 1 to 3 then 2 to 4 very easy 3 to 4 very easy and 4 to 5 खत्म इतना डायग्राम है छोटा है ठीक है yes or no सो डायग्राम इतना इजी बनूंगा आफ्टर दैट ऋतिका कितने टाइमिंग्स गिवन है 10 that is optimistic most likely and pessimistic ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ sequence ਲਿਖਦੇ ਚੇਸਟਾ we will write it in sequence tm then tp then to ਅਸੀਂ ਇਸ sequence notes 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਅਸੀਂ will write the first column will be tm then tp then to ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 4 ਟਾਈਮਸ ਕਰੀ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਕਰੋ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 6 ਠੀਕ ਹੈ we'll find the te after that ਤੁਸੀਂ variance find ਕਰਨਾ variance ਦਾ formula is tp minus to upon 6 ਦਾ whole square so ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ tp ਔਰ to ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 6 ਐਂਡ whole square ਠੀਕ ਹੈ ਜਦ ਵੇਰੀਐਂਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਵਰ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਸਟਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵੇਰੀਐਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਦੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਕਿਹਦੇ ਕਰਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ 'ਚ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪਾਥ ਦਾ ਵੇਰੀਐਂਸ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਐਂਸ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਾਓਗੇ ਉਹ ਵੇਰੀਐਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਟਸ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੇਰੀਐਂਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਈਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ एग्री जिद्दे स्टैंडर्ड डिवीजन मिले अगे थोड़ा बैल क्वेश्चन जुड़िया कि नहीं उस लैवल ते तुहानू सेंटर पॉइंट मिले जिहड़ी तुहाडी क्रिटिकल पाथ दी ड्यूरेशन आई दैट बिकम्स योर मीन जिद्दां पिछले क्वेश्चन च 17 आया सी दैट बिकम्स मीन स्टैंडर्ड डिवीजन मिल चुका एंड z इज 0 उत्थों बेल शेप वाले क्वेश्चन च कंटिन्यू हो गया लिंक दिस वाज द कांसेप्ट कि दोनों लिंक्स जुड़े ठीक है क्लियर टू ऑल यस और नो सो पूछा गया उन्होंने ड्रॉ द प्रोजेक्ट नेटवर्क हो जाएगा फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन देखो इधर लास्ट पॉइंट की डिस्कस हो रहा है एवरीवन बी पॉइंट ने की पूछा फाइंड द एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन एंड वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी जो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸਿਸਟम एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन मींस टी फॉर ईच एक्टिविटी एंड v means variance for each activity दोनों फाइंड कर लोगे then what is the expected project length means duration critical path के according ਤੁਸੀਂ फाइंड कर लेंगे and ਤੁਸੀਂ पूरे दी variance भी फाइंड कर सकते हैं and standard deviation also बस क्वेश्चन ने इतना ही पूछा बेल शेप वाला कांसेप्ट इस क्वेश्चन कितने भी ऐड नहीं हुआ यस और नो सेकंड नेक्स्ट 44th क्वेश्चन देखो the time schedule for different activities of a project is given ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਹੈ 3 ਟਾਈਮਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਸ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਕਿਤੇ 3 ਟਾਈਮਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲ ਸ਼ੇਪ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜੂਗਾ ਜਾ ਕੇ 3 ਟਾਈਮਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਵਾਲੇ ਚ 3 ਵਾਲੇ ਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਟੀਪੀਟੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੇਰੀਐਂਸ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਯਸ ਔਰ नो ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੈ कंस्ट्रक्ट द PERT network and compute critical path and its duration the times वाला हो गया क्वेश्चन then total float and free float means ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਲਾ floats वाला table yes or no yes or no floats वाला table ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ again we'll discuss the diagram in short and rest will be your homework again in this question और करोगे तो प्रैक्टिस ना नंबर आने फाइनल सिंपली जितनी प्रैक्टिस कर लोगे नंबर ਇਹਦੇ इजी हो जाओगे ठीक है टेल मी ਇਹਦਾ डायग्राम बनाइए की बनूगा फर्स्ट ऑफ ऑल 1 to 2
देन नेक्स्ट बोलो 1 to 3 नेक्स्ट वन 1 to 4 ओके देन नेक्स्ट 2 to 3 ओके 2 to 6 नेक्स्ट 3 to 5 इतने सेंटर च ਆਪਾਂ 5 बनाता after that 4 to 5 then 4 to 6 and 5 to 6 एंडिंग पॉइंट तो सिंगल ही आया ना राजा एवरीवन यस और नो बाकी काम हो जाऊगा सारा यस और नो टाइमिंग सिंगल ही है तो कोई इशू नहीं है टाइम 1 to 2 is 8 1 to 3 is 10 1 to 4 is 8 2 to 3 is 10 2 to 6 16 3 to 5 17 4 to 5 18 4 to 6 14 and 5 to 6 9 ठीक है डायग्राम च डाउट है डायग्राम एक बार दोबारा बनाने हैं ਆਪਾਂ एक बार फिर बनाने हैं ठीक है पहला फ्री हैंड बनाया एक बार प्रॉपर बना के देखते हैं चलो एक बार फिर ड्रॉ करते हैं बिफोर क्लोजिंग आवर क्लास चलो टेल मी सब तो पहला राजा इवेंट 1 बोलो रितिका इवेंट 1 to 2 देन 1 to 3 थोड़ा जाके 2 तो then it's 1 to 4 next it was 2 to 3 so we'll connect 2 to 3 next one 3 to 5 नहीं पहला 2 to 3 तो बाद 2 to 6 next रितिका 2 to 6 तो बाद 3 to 5 so we'll connect here after that 4 to 5 after that 4 to 6 after that 5 to 6 this will be your network diagram बाकी हो जाओगा राजा yes or no anyone तान्या हो जाऊगा ऑनलाइन राजा इस तो आगे फर्दर नेटवर्क डायग्राम एंड फ्लोट्स फ्लोट द टेबल सानू एज पर द सीक्वेंस ही करना ठीक है सो कंप्लीटेड बाकी ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਚ ਕਰਾਂਗੇ